অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ অসমী আই ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অলেখ দিবস ৰাতি গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অলেখ দিবস ৰাতি Ladies and gentlemen, it is with immense pride and reverence that we welcome Mrs. Dheera Solia Hazarika, the first women pilot of Assam, a legend whose wings first touched the skies in 1961. Born in Jorhat, she trained at the Assam Flying Club and became a beacon of courage at a time when the thought of a women pilot was almost unheard of in India's northeast. This year, at the age of 85, she once again took flight, piloting a historic tiger moth over the skies of Berkshire, dressed in a traditional Muga Mekla Sador, embodying the grace and spirit of Assam. Her story is not merely of aviation, but of perseverance, dignity, and dreams that never fade. Ma'am, we are truly privileged to have you with us today. Your journey stands as an enduring inspiration, reminding us all that sky is not only the limit, but the beginning. Shraddhar Rais, Amar Majot Ahi etia upasthit hoisehi, Okhomor prothom mohila pilot, Srimati Dheera Solia Hazarika, ji ek kiংবদন্তি আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে তেওঁ 1961 চনতে মাত্ৰ 21 বছৰ বয়সত পাইলট হিচাপে আকাশৰ বুকত উৰা মাৰিছিল আৰু এই বেলি 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত 85 বছৰ বয়সতো পৰম্পৰাগত মুগা মেখেলা চাদৰ পৰিধান কৰি বাৰ্কশ্বায়াৰ আৰু থেমছ নদীৰ আকাশত ঐতিহাসিক টাইগাৰ মথ প্লেনেৰে পুনৰবাৰ উৰা মাৰিছিল আমি আজি তেওঁক আমাৰ মাজত আদৰিবলৈ পাই গৌৰৱান্বিত হৈছো Amid these modern displays of power and partnership, the story of the MiG-21 shines as a proud legacy that shaped this journey. Introduced in 1963, the MiG-21 became India's first supersonic jet and the backbone of the Air Force for over 6 decades. It defended the nation in the 1965 and the 1971 wars and soared valiantly in the Kargil conflict, earning countless laurels for its fearless pilots. For over 3 decades, Tezpur was home to the legendary MiG-21s, where generations of fighter pilots sharpened their skill at the famed MiG Operational Flying Training Unit, or MOFTU. As the Indian Air Force now flies advanced aircraft like Rafale, Tejas, and Su-30 MKI across international skies, the MiG-21 bowed out in 2025. Leaving behind a legacy of courage, discipline, and glory. Its roar may fade away from runways, but its spirit will forever inspire generations to touch the sky with glory. Hokti aru অংশীদাৰিত্বৰ এই আধুনিক প্ৰদৰ্শনৰ মাজতে MiG-21ৰ কাহিনীয়ে এই যাত্ৰাক গঢ় দিয়ে এক গৌৰৱময় উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে জিলিকি উঠিছে 1963 চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল MiG-21ক ই ভাৰতৰ প্ৰথম সুপাৰসনিক জেট আৰু 6 দশক ধৰি বায়ুসেনাৰ মেৰুদণ্ড হিচাপে পৰিগণিত হয় 1965 আৰু 1971 চনৰ যুদ্ধত ই জাতিটোক ৰক্ষা কৰিছিল আৰু কাৰ্গিল সংঘাতত সাহসেৰে উৰি গৈছিল ইয়াৰ বাবে নিৰ্ভীক পাইলটসকলে অগণন সুবাসিক লাভ কৰিছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাই এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আকাশৰ ওপৰেৰে ৰাফেল তেজস
আৰু সুখয় 30 MKIৰ দৰে উন্নত বিমান উৰুৱাই দিয়াৰ লগে লগে 2025 চনত MiG-21 প্ৰণাম কৰে ভাৰতীয় বায়ুমণ্ডলক। ইয়াৰ গৰ্জন হয়তো ম্লান হৈ যাব, কিন্তু ইয়াৰ আত্মাই চিৰদিনৰ বাবে প্ৰজন্মক মহিমাৰে আকাশ স্পৰ্শ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব। We now have the number 7 Air Force Band, who will enthrall you with their musical symphonies. The band stands as a symbol of pride, precision, and harmony. It is one of the finest military bands in the country, known for its stirring performances and immaculate discipline. Most of the musicians of the number 7 Air Force Band were associated with the prestigious Air Warrior Symphony Orchestra. They have performed abroad in various countries, and today they'll be marching to the tunes of Vayu Shakti, Air Force Colors, Sound Barrier, and Sare Jahan Se Acha. Leading the band today is Master Warrant Officer B.K. Chakraborty.
Ladies and gentlemen, together for the number 7 Air Force Band. In a short while from now, presenting the Air Warrior Drill Team, the Arjun.
শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আকাশী উৰাজাহাজৰ প্ৰদৰ্শনত অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষত লাচিতক সাক্ষী কৰি ভাৰতীয় বায়ু সেনাবাহিনীৰ সুৰক্ষতাৰ আৰু সুকৌশলৰ এক মনোমোহা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত। উৰাজাহাজবোৰ ক্ৰমান্বয়ে হৈছে MiG-21, Mi-17, Tejas, Dornier 228, C-295, MiG-29, C-130, Super Hercules, AN-32 আৰু ইত্যাদি বহুতো। এই প্ৰদৰ্শনীয়ে আমাৰ মাজত নিশ্চয়কৈ স্বদেশ প্ৰেমৰ ভাৱ আনি দিব। মনতে গুণগুণাই উঠে, দেশ বুলি ক'লে আদেশ নালাগে, মোৰ তুমৰুলি তেজত টকবগাই উঠে, এহেজাৰ এটা ৰণুৱা কৰা। মোৰ শব্দৰ শোভাযাত্ৰা হওক, ক্ৰূৰ কুটিল ৰাতিৰ প্ৰহৰী হওক, তীৰ বিৰাই থাকক বিক্ষোভৰ চোকা তৰোৱাল, টলমল শব্দৰ উচ্ছ্বাসিত তেজৰ প্ৰবাহে প্ৰবাহে।
Ladies and gentlemen, as we gather today at the historic Lachit Ghat on the banks of mighty Brahmaputra River, a river that has witnessed the valor of Lachit Borphukan, whose name this very ghat proudly bears. শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজসকল, মহান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহিমাময় পাৰত আপোনালোক সকলোকে অতি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। আপোনালোকে বহিছে লাচিত ঘাটত, যিটো স্থানৰ নাম কিংবদন্তী আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ সন্মানত ৰখা হৈছে, যাৰ এই নদীৰ পাৰত ভাৰতৰ যুদ্ধ ঐতিহ্যৰ পৃষ্ঠাত অমৰ হৈ থিয় দিছে তেওঁৰ বীৰত্ব। Before we begin the flying display, allow us to orient you to the layout of display area so that you can follow each aircraft with ease as it paints its story across the splendid Assamese skyline. আমি আজিৰ বায়ু প্ৰদৰ্শনী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ ডিসপ্লে এলেকাৰ দিশৰ সৈতে আপোনাক সকলোকে পৰিচিত কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আপুনি এই মনোমোহা নদীৰ পাৰৰ পটভূমিত বিমানৰ গতিবিধি স্পষ্টভাৱে অনুসৰণ কৰিব পাৰে। সকলো দিশ ৰখা হৈছে দেশৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ফালে মুখ কৰি আপোনাৰ বাওঁফালে অৰ্থাৎ পশ্চিম দিশলৈ দূৰ দিগান্তত থিয় হৈ আছে পূজনীয় কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত। আমাৰ ওচৰতে আছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা দলং। নদীখনক ৰূপৱতীভাৱে ঢাকি থোৱা দেখা যায়। গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ পাৰক উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সৈতে সংযোগ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগ। To your left, far in the distance atop the Nilanchal hills, you can see the Kamakhya temple. Closer to us lies the elegant Kumar Bhaskar Barma Bridge, linking Guwahati to the northern bank of the Brahmaputra. जब आप मंच से नदी की ओर मुख करके बैठे हैं, आपके बाएं ओर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या मंदिर। इसके निकट ही कुमार भास्कर वर्मा सेतु अपनी भव्यता के साथ इस पार को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। Right in front of you across the water is North Guwahati. If you look carefully at the foothills ahead, you'll see the Ashwakalan's temple. A little beyond, amid lush green hills, stands IAF Guwahati. ঠিক সন্মুখতে অৰ্থাৎ নদীৰ সিপাৰে উত্তৰ দিশলে নদীখনৰ পোনে পোনে বিশিষ্টভাৱে দেখা যায় উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ। কোৱা হয় যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ইয়াত নিজৰ ঘোঁৰা লৈ বিশ্ৰাম লৈছিল, যাৰ বাবে মন্দিৰটোৰ সেইভাৱে নাম দিয়া হৈছে। এই পবিত্ৰ মন্দিৰটোৰ আজিৰ আকাশী প্ৰদৰ্শনৰ বাবে কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে। सीधे सामने ब्रह्मपुत्र के उस पार फैला है उत्तर गुवाहाटी। सामने नदी के तट पर जो भव्य मंदिर दिख रहा है वह है अश्वक्लांत मंदिर, जहां जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने अश्व को विराम दिया था। इसके आगे हरे भरे पहाड़ों के बीच झलकता है IIT गुवाहाटी। To your right, on the small river island, gleams the Umananda temple, dedicated to Lord Shiva. Further beyond, towards the city, stands Brahmaputra Heritage Center. আপোনাৰ সোঁফালে অৰ্থাৎ পূব দিশলৈ ময়ূৰ দ্বীপত অৱস্থিত চিত্ৰময় উমানন্দ মন্দিৰটোলৈ চাব পাৰে, নতুবা যাক আমি উমানন্দ দ্বীপ বুলি জানো। दाहिने ओर नदी के बीच छोटे से द्वीप पर स्थित है उमानंद मंदिर, भगवान शिव को समर्पित विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप। और इसके आगे शहर की ओर ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर। All flying displays will unfold right in front of you. Over the expanse of this great river, aircraft will approach from your right, that is, from the eastern direction, execute their breathtaking maneuvers over the Brahmaputra and exit to your left. সমগ্ৰ আকাশী প্ৰদৰ্শন অঞ্চলটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ
পূব পশ্চিম অংশৰ কাষতে আছে। বিমানে মূলতঃ সোঁফালৰ পৰা অৰ্থাৎ পূব দিশৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিব। নদীৰ ওপৰেৰে আপোনাৰ সন্মুখত নিজৰ কৌশল সম্পন্ন কৰিব আৰু বাওঁফালে ওলাই যাব। आज का संपूर्ण वायु प्रदर्शन इसी नदी के ऊपर आपके सामने होने जा रहा है। विमान आपके दाहिने अर्थात पूर्व दिशा से आते हुए दिखेंगे और अपनी चित्ताकर्षक कलाबाजियां दिखाने के बाद बाईं ओर पश्चिम दिशा में प्रस्थान करेंगे। So keep your gaze steady on the horizon with Ashokalan Temple as your reference point. For the sky above Guwahati is about to come alive with precision, power and pride. আপোনাৰ সন্মুখৰ সন্দৰ্ভ কেন্দ্ৰবিন্দু আশ্বক্লান্ত মন্দিৰৰ হিচাপে লৈ সকলো ডাঙৰ কৌশল সেই দৃশ্যৰ ভিতৰতে ঘটিব। এই পবিত্ৰ ভূমিৰ ওপৰত আকাশখন অতি সোনকালে সজীৱ হৈ উঠিব বজ্ৰপাত, নিখুঁততা আৰু গৌৰৱেৰে। इसीलिए अपनी दृष्टि क्षितिज पर स्थिर रखें। ठीक आपके सामने अश्वक्लांत मंदिर को केंद्र में रखते हुए कुछ ही क्षणों में यह आसमान भारतीय वायुसेना की अद्वितीय क्षमता, अनुशासन और गौरव से गूंज उठेगा।
During the course of the display, you will hear and observe flares and firecrackers being dispensed. Please do not be alarmed or let your attention be diverted, as these are used to scare away the birds. So do keep your attention riveted on the proceedings. In the unlikely event of any untoward incident, please do not panic. Our well trained teams are in position to cope up with any contingency. Do allow them to handle their emergencies in the best and most professional manner. We also have trained doctors and helpers available who are positioned across the venue for your assistance. In case of any medical emergency, please approach the nearest medical assistance point or contact our event volunteers. You may also contact security personnel who will immediately guide you to the medical team. May I please request the audience to refrain from opening any packets containing eatables during the display, as they attract birds, which are hazardous for the flight safety. After the arrival of the chief guest, national anthem will be played. Audience is then requested to rise for the national anthem. বিমান প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত আপুনি কেতিয়াবা বগা ৰঙৰ ধোঁৱা নিৰ্গত হোৱা দেখিব পাৰে, কিন্তু ভয় নাখাব। আকাশ মাৰ্গৰ পৰা চৰাই চিৰিকটি খেদি পঠিওৱাৰ বাবে এই আতচবাজি কৰা হয়। আপোনালোকে বৰঞ্চ বিমানৰ উৰাণ প্ৰণালীৰ ওপৰত নজৰ দিয়ক। নিশ্চিন্ত থাকক, কিয়নো আমাৰ প্ৰতিজন পাইলট উচ্চ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত। উৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিটো পৰিস্থিতিৰ বাবে তেওঁলোক সাজু থাকে। পিছে আপোনালোকলৈ এটি বিশেষ অনুৰোধ যে উৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা সময়ত কোনেও যেন খোৱা বস্তু উলিয়াই নলয়, কাৰণ পেলনীয়া খাদ্যবস্তুবোৰে চৰাই চিৰিকটিক আকৰ্ষিত কৰে আৰু সেইটোৱে উৰণ প্ৰক্ৰিয়াত গুৰুতৰভাৱে ব্যাঘাত জন্মায়। মুখ্য অতিথিৰ আগমন আৰু প্ৰস্থানৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বাজি উঠিব। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বজাৰ সময়ত বহাৰ পৰা থিয় হৈ দিব। গুৱাহাটীক উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ বুলি জনা যায়। সেয়েহে উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰৰ লাচিত ঘাটৰ পৰা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত হ'বলগীয়া এই উৰণ প্ৰদৰ্শনীলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমাৰ বিশ্বাস যে বায়ু সেনাই আপোনালোকৰ আগত দৃষ্টিনন্দন উৰণ প্ৰদৰ্শনী প্ৰস্তুত কৰিব। Once again, to enthrall the assembled audience, we have the number 7 Air Force Band. The band today is being led by Master Warrant Officer B.K. Chakraborty.
We are extremely privileged to have with us the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma and Mrs. Riniki Bhuiya Sarma. We are also honored to have with us the Honorable Governor of Assam, His Excellency Shri Lakshman Prasad Acharya, our chief guest for today's aerial display. মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা বাইদেউ উপস্থিতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে মুখ্য অতিথি সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যদেৱক আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, before we begin the flying display, please note the display layout. Aircraft will mainly arrive from the right side of Grandstand and Umananda Temple in the east. আজি সকলো বায়ু প্ৰদৰ্শন এই নদীৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত হ'ব। বিমানবোৰ আপোনাৰ সোঁফালৰ পৰা অৰ্থাৎ পূব দিশৰ পৰা আহিব আৰু নিজৰ মনোমুগ্ধকৰ কলাবাজি দেখুৱাই প্ৰদৰ্শন কৰি বাওঁফালে অৰ্থাৎ পশ্চিম দিশৰ ফালে গৈ অন্তৰ্ধান হ'ব। आज का संपूर्ण वायु प्रदर्शन इसी नदी के ऊपर आपके सामने होने जा रहा है। विमान आपके दाहिने अर्थात पूर्व दिशा से आते हुए दिखेंगे और अपनी चित्ताकर्षक कलाबाजियां दिखाने के बाद बाएं ओर यानी पश्चिम दिशा में प्रस्थान करेंगे। Today's Flypast showcases the glorious journey of the Indian Air Force from the legendary Harvard of the 1940s to the cutting-edge Rafale of 2025. Each aircraft a testament to the technological evolution and operational excellence, maintained with precision by our dedicated air warriors and flown with pride by our valiant pilots. Leading the Flypast, approaching now from the Umananda end, a first formation. Steady, poised and majestic, the proud workhorses of the Indian Air Force, Mi-17 helicopters in the Dwaj formation. Leading the formation is Wing Commander Shwetang Singh Dagur. Joining him are the proud air warriors from the Eastern Hills, JW Dipankar Barua and JW Molay Pritam Sekhia. And the formation is proudly trooping the national flag and the Indian Air Force flag. এই আটক ধুনীয়া যন্ত্ৰবোৰে ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাক ওপৰলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায়। গুৱাহাটীৰ আকাশত বীৰ আৰু সতৰ্কতাৰ প্ৰতীক। प्रतिबद्धता की प्रेरणा, मातृभूमि का वरदान हूँ, योद्धाओं का बलिदान मैं देश का अभिमान हूँ। देश की आन, पान और शान को दर्शाते तिरंगे को हवा में लहराते हुए आपकी दाहिनी ओर से ध्वज फॉर्मेशन। And now get yourself for a surprise, slicing across the Brahmaputra skies in the honor of the valor of the Assamese people. Call sign Lachit comes the answer to our enemies, the Tejas, led by Wing Commander Paritosh Bansal. হাত চাপৰি বজাই সম্ভাষণ জনাওক ভাৰতীয় মাটিতে গঢ় লৈ উঠা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ
From the right of the grandstand, behold the Mi-17 1V helicopters, call sign Holong in the classic wing formation, led by Wing Commander Rishi Kant. Now, emerging from the woman on the end, call sign Rhino, the Apache attack helicopters, in a razor-sharp wing formation. At the controls, Group Captain Anand Kumar Yadav. এতিয়া পূব দিগন্তৰ পৰা ওলাই আহিছে লাইট কম্বেট হেলিকপ্টাৰ আৰু আপাচি এটেক হেলিকপ্টাৰ। जय हिंद, नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुवाहाटी। কি খবর সব ভালনে? সারং টিমো ফালোর পরা স্বাগতম জানাইস আজির দিনটো ফ্লাইং ওর খানে বোর ভাল। Today here as we celebrate the 93rd anniversary of the Indian Air Force, this year's theme, infallible, impervious and precise, comes alive not just in words but in motion right here over the majestic Brahmaputra. Guwahati, আমি আরম্ভ করুন এটা। All right then, get your cameras up and your hearts racing. And now without further ado, please welcome the brand ambassadors of the Indian Air Force, the Sarang helicopter display team. What a grand entry by the Sarangs, slicing through the skies in the mighty arrowhead formation. Now watch closely as the team is changing to wine glass formation, raising a toast to the 93rd anniversary of the Indian Air Force. फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं सारंग 1, जिसमें उड़ान भर रहे हैं टीम के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर अभिजीत कुमार। उनके ठीक पीछे सारंग 5, उनके पीछे सारंग 4, बाईं ओर सारंग 2 और दाहिनी ओर उड़ान भर रहे हैं सारंग 3। आज सारंग 1 के सह पायलट हैं स्क्वाड्रन लीडर राहुल। स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों के संचालन और आत्मनिर्भरता का समर्थन करने की हमारी खोज का परिणाम है। और अब भारतीय वायुसेना की यह भव्य टीम अपनी अगली आकृति से आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए हवा में अंग्रेजी अक्षराई का निर्माण कर आपके सामने से गुजरेगी। And this I stands for you, me, our motherland, and for these indigenously developed helicopters. মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যে যেতিয়া আমাৰ হেলিকপ্টাৰবোৰ আপোনালোকৰ আগেৰে যায় তেতিয়া আপোনালোকে হাত চাপৰি বজাব। Coming in, Sarang representing the Atmanirbharta of our nation, the India formation. सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने भूखों से उड़ा दी। Continuing with the
introduction, the pilot in command of Sarang 2 is Squadron Leader Sachin Govind. His co-pilot today is Squadron Leader Buddhi Sagar Dumre. The captain of Sarang 3 is Wing Commander Veer with his co-pilot Squadron Leader Aditya. Wing Commander Janpriya is in command of Sarang 4 with his co-pilot Squadron Leader Ankita. And our number 5 is being flown by the deputy leader of the team, Wing Commander Ravish with his co-pilot Squadron Leader Ajit. और अब अपनी नजरें कामाख्या और उत्तर गुवाहाटी के बीच से आते हुए हेलीकॉप्टर पर बनाए रखें। जल्द ही लीडर के आदेश पर यह टीम डायमंड की आकृति में तब्दील हो जाएगी। आइए सुनते हैं लीडर की कमांड सीधे उनकी कॉकपिट से। That was the leader, and here's the reaction. An aerial diamond dedicated to the gateway of the East, Guwahati. And now don't look away even for a second, as you are in for a breathtaking surprise, and there goes number 4 pulling up for a stall turn. And now, as the aircraft flight past, don't forget to wave at the pilots and wish them luck. Here they are making a short exit and will be soon back in the arena with more thrill. भारतीय वायुसेना अचूक अपने लक्ष्य में, अभेद्य अपने संकल्प में और सटीक अपने हर अभियान में. And to showcase these qualities, Sarangs are now positioning for the team's signature maneuver, the Dolphins Leap. So hold on to your hats because it is about to get epic. These choppers are about to defy gravity and blast off into the Guwahati skies, symbolizing the motto of the Indian Air Force, touch the sky with glory. So please look straight ahead as Sarang 1, 2 and 3 run in for the Dolphins Leap. And here they go, like a dolphin in the ocean, Sarangs in Dolphins Leap. And as promised, there goes number 4 joining up with the formation. On this occasion, I would love to take you back into history and tell you something about the origin of this team. On 31st January 2003, for the first time, 2 ALH aircraft under evaluation trials took off and performed in unison. It was on this historical day that Sarang team was conceptualized. Later, ALH evaluation flight was renamed as 151 helicopter unit in December 2003. मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारी टीम वर्तमान में केवल एशिया की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एकमात्र 5 मिलिट्री हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है. On this note, set your gaze straight ahead on the Ashwakant temple as the team is rolling in for the crossover break. Both pairs flying abreast will execute a synchronized banking, dramatically tilting towards each other until their rotors are nearly vertical and crossing in very close proximity. Look straight ahead for the crossover break as we await the leader's call.
হাত চাপৰি মাতা নাই আমাৰ পাইলটৰ কাৰণে অলপ হাত চাপৰি জোৰকে দিব देवियों एवं सज्जनों अब आप सब इन विमानों को और नजदीक से देखने के लिए तैयार हो जाइए Helicopters are turning in, getting closer and way more intense for the vertical synchro maneuver. We call it the double arrow cross. Both pairs approaching each other will soon cross in the same vertical plane with a gap of less than 10 meters right in front of you. Ladies and gentlemen, look straight ahead for the double arrow cross. अद्भुत हवाई प्रदर्शन को सफलतापूर्वक अंजाम देने हेतु हमारी अनुरक्षण टीम का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है जो इन 5 हेलीकॉप्टर को जमीन से हवा में उड़ान भरने से लेकर उनकी सुरक्षित वापसी तक की भारी जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हैं और हमारी इस टेक्निकल टीम के लीडर है विंग कमांडर प्रियांशु मुखर्जी असिस्टेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल वरुण The degree of difficulty has now gone up, ladies and gentlemen, as the team prepares for the sky spectacle, the level mesh. अपनी कठिनाइयों के स्तर को और बढ़ाते हुए एक दूसरे के आमने सामने एक समान स्तर पर एक सेकंड से भी कम समय के भीतर दोनों ओर से आते हुए विमान एक दूसरे को मानो छूकर गुजरेंगे बिना पलकों को झपकाए अपनी नजरें सामने बनाए रखें लेवल मेश के लिए The team performs under the ever-watchful eyes of the team safety officer. Today's safety officer is Wing Commander Adarsh Thakur, assisted by the videographers. Everyone, now get ready to witness the unmatched precision of our pilots even closer to you. This is one of those times where you will hold your breath and wonder how they pull it off with such finesse. Soon both the pairs rushing head-on will cross each other's flight path, executing a coordinated pitch up with just a hair's breadth of separation. तो अपनी नजरें दोनों ओर बनाए रखें क्योंकि उमानंदा मंदिर की ओर से आ रहे हैं सारंग 1 और सारंग 3 और कामाख्या की ओर से आगे बढ़ रहे हैं सारंग 2 और सारंग 4 लेवल क्रॉस के लिए आप सबको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि ऐसे मैन्यूवर्स को अंजाम देने के लिए हमारे जांबाज पायलट केवल एक रोटर के फासले पर उड़ान भरते हैं और अब ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार विपरीत दिशाओं से आते हुए सारंग 3 एवं सारंग 4 एक दूसरे को तेज गति से पार कर आपके समक्ष स्टॉल टर्न करते हुए अपने सिग्नेचर मैन्यूवर का प्रदर्शन करेंगे लुक स्ट्रेट अहेड फॉर हाई स्पीड क्रॉस अनेक रंग अनेक भाषाएं और इस अनेकता में एकता ही हमारे भारत की पहचान है and that trickles down to our team as well coming from diverse cultural backgrounds speaking different languages we all work together towards our common aim of winning hearts and saving lives right in front we present a beautiful pulsating heart to the lovely people of Assam with love Sarangs There comes our Cupid number 5 from your left, piercing straight through the beautiful Sarang heart.
एवं सज्जनों, इन रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर को देख भ्रमित न हो। आवश्यकता अनुसार इन सुंदर विमानों की भूमिका भी बदल जाती है। भारतीय वायुसेना के उच्चतम वायु योद्धाओं की हमारी इस टीम ने समय की मांग अनुसार सभी राहत कार्यों में भी अपनी उड़ान कर्तव्यों समान ही अपनी उत्कृष्टता का परिचय दिया है। Since the team's formation, it has mesmerized the audience in Singapore, Chile, Germany, United Kingdom, Bahrain, Mauritius, Sri Lanka, Russia, Dubai, and Egypt. और अब अपनी नजरें बनाए रखें ठीक सामने अश्वक्लांत मंदिर के ऊपर, क्योंकि सारंग आ रहे हैं अपने आज के आखिरी मैन्यूवर के लिए। Now, ladies and gentlemen, all eyes to the front as the team is rolling in for the grand finale of today's spectacular display. The Sarang split on the soul-lilting tune of Vande Mataram. This finale is dedicated to the grand success of Operation Sindoor, a glorious chapter written by the Indian Armed Forces with courage, precision, and pride. As the formation splits, the leader will pull up to present a salute to the nation, painting the skies in trail of red as a tribute to the valor and sacrifice of our warriors in Operation Sindoor. We shall listen out for the leader's call. So, ladies and gentlemen, this was Sarang helicopter display team of one of its kind in the world. Guwahati, let your cheers echo across the city. Give it up one last time for the Sarang team. Fearless, flawless, and definitely unforgettable. আপোনালোকে ভাল পাইছেনে? আমাৰ পিছে বৰ ভাল লাগিল। Sarang team Instagram আৰু Twitter ত available আছে। আপোনালোকে আমাৰ ID sarang_IAF গৈ আমাক follow কৰিব পাৰে। With this, on behalf of entire team, this is Sarang commentator, Flight Lieutenant Pallavi Sangwan signing off. धन्यवाद। And now, approaching from the right of the grandstand, the unmistakable silhouette of the Dornier 228, leading a crisp wing formation. The captain is Wing Commander Jagjeet Singh Madhu. ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে সোঁফালেৰে আপোনালোকে চাব পাৰে ডৰ্নিয়াৰ 228। ই হৈছে ভাৰতৰ বিশ্বাসযোগ্য চুটি দূৰত্বৰ পৰিবহণ। From the Umagan end now, the newest addition to our transport fleet, the C-295 aircraft in an elegant H-class formation. Leading the formation is Wing Commander Vikas. আমাৰ পৰিবহণৰ নতুন সংযোজন C9295 এচেলন ফৰ্মেশ্যনত। Approaching now from the right of the grandstand, the mighty C-130J Super Hercules and the very versatile AN-32 in the famous small boy formation. At the controls of Super Hercules is Group Captain Manish Vyas. The AN-32 on the left is being flown by Group Captain KV Prakash. On the right, Squadron Leader Pathania. এতিয়া আপোনাৰ সোঁফালৰ পৰা চাপি আহিছে শক্তিশালী C-130J Super Hercules আৰু বহুমুখী AN-32 বিখ্যাত বিমান দুখন। Ladies
Ladies and gentlemen, we shall now have Painting the Skies of Guwahati, the major success story of the Indian aerospace industry, the light combat aircraft Tejas. The aircraft is being flown by Group Captain Karthik Singh with the call sign DECO. So brace yourself for the first maneuver, the hesitation roll. Let's see how many of those rolls can you count. There it goes, 1, 2, 3, and 4. And a bonus snap roll. Watch as the aircraft pitches up into the lovely skies of Guwahati, performing the vertical pitch, and flies out in the sun, exuding radiance. And there it spots an adversary. The aircraft now prepares to carry out a max return in front of you, spotting an adversary and turning like a Kaziranga rhino. Watch how the skies resonate as power meets precision. Since its inception in 2016, Tejas has been the center of attraction in display arenas and the center of discussion in military op rooms. The pilot is now positioning for the signature maneuver, the red-eye turn. In this, the pilot and the aircraft is subjected to negative 3.5 G. Watch as Tejas bends gravity to its will. Elegance, precision, and power in perfect symphony, a true demonstration of the capability of this aircraft. Look straight ahead as the pilot positions for an aerial salute to the guests. DECO will now perform the vertical Charlie. And here the aircraft pulls off, showing off its Delta platform, grace in motion. Continue looking straight ahead, the aircraft will come for a very tight offensive turn, like turning tight on a racetrack in the sky. Watch as it turns effortlessly in a radius of just a few hundred meters. A maneuver so stunning it's hard to believe a fighter could move with such grace. Yet Tejas performs it with effortless ease. The pilot will now position for the next maneuver, the slow speed march. Watch how the aircraft effortlessly glides past you at a staggering speed of just 200 kilometers per hour. Time itself slows as the Tejas flows, calm yet commanding like a beam of light in motion. Watch as it climbs off, showing off its reserve of thrust. The pilot will now position himself for a half roll for the last maneuver of the display. Look to the right as the aircraft will carry out multiple rolls and invert to bid farewell to the lovely audience, illustrating the Indian Air Force's motto,
touch the sky with glory. And there it goes, rolling to the blue yonder. As it fades into the blue, we salute the brilliance, the courage, and the spirit of Tejas, the light that guards our skies and inspires our nation. আপোনালোকৰ সোঁফালৰ পৰা ওচৰ চাপি আহিছে MiG-29 যুঁজাৰু বিমান টেংযুক্ত চেলুৱেটৰ সৈতে এয়াৰবৰ্ন আৰ্লি ৱাৰ্ণিং এণ্ড কণ্ট্ৰল বিমানখন বজ্ৰা ফৰ্মেশ্যনত। Approaching from the Umananda temple, silent sentinel of our skies, the airborne early warning and control aircraft, with twin-tail silhouette of MiG-29 fighters in wing formation. Leading the formation, Group Captain V. Prabhakaran and MiG-29 Spearhead Wing Commander Bharat Kaushik. Now approaching the Colossus of the skies, the IL-78 Midas, India's aerial refueler, accompanied in an S-turn formation by sleek delta-winged arrows, the Mirage 2000 aircraft, call sign Kaziranga. At the controls of refueler, Wing Commander Umesh Kumar. Lead pilot of Mirage 2000 is Squadron Leader Sabin NK. আপোনাৰ সোঁফালৰ পৰা আহিছে IL-78 Midas। Approaching the grandstand now, symbols of youthful spirit and discipline, the Kanchenjunga formation. In tight wing formation, you will see the Hawk Advanced jet trainers at the controls today, squadron leader Shankar PR. এই বিমানসমূহে প্ৰতিজন উদীয়মান যুঁজাৰু পাইলটৰ সপোন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে প্ৰশিক্ষণ বৰ্তনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অপাৰেশ্যনৰ ফ্ৰণ্ট লাইনলৈকে। And now approaching the grandstand, watch the elegant Jaguar, deep strike aircraft in a flawless diamond formation. The lead pilot, Group Captain Sumit Kumar Dash. সোঁফালৰ পৰা কাটি অহা ত্ৰুটিহীন ডায়মণ্ড ফৰ্মেশ্যনত মাৰ্জিত জাগুৱাৰ ডিপ ট্ৰাইক বিমানখন চাওঁ। Approaching next, massive yet graceful, the twin-seat Sukhoi 30 MKI in the majestic wing formation. Lead pilot, Wing Commander Shobhit Mishra. We will now have the heritage flight of the Indian Air Force, who will light up the sky and your hearts with their pleasant maneuvers. और अब विरासत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी ही देर में आकाश में नजर आएगा एक विंटेज योद्धा हावर्ड. The aircraft of the heritage flight are the only flying types of their kind in the subcontinent, and they're here to showcase the glorious past of the Indian Air Force. Today, as it graces the skies once more, the Howard stands not only as a proud vintage bird, a tribute to the spirit of the Indian Air Force.
Watch as it forms a figure of 8 in the sky, demonstrating a perfect blend of grace and control, a tribute to the training and the traditions it once embodied. The aircraft today is being flown by Wing Commander A.K. Singh and Wing Commander N.D.S. Reddy, and it depicts the journey of the Indian Air Force over the glorious years. It reminds us of our humble beginnings while inspiring the future generations to keep flying till the end. From the young cadets taking their first solo flights to the future combat leaders honing their skills, the Howard has played a vital role in building the foundation of air power in our nation. The aircraft is now positioning for a run-in from your north. Watch as it soars towards the audience, offering a formal greeting to you all and indicating that we are just getting started. Do not be deceived by the beautiful looks of this aircraft. It has played an important role in the history of the Indian Air Force. Commissioned in 1947, it got decommissioned in 1989. So the aircraft that you see in front of you is over 80 years old. Once the trainer of heroes, now the storyteller of the skies. Now once again, shift your gaze towards the left of grandstand. We have the Howard. What you are witnessing is not just a fly past, but the flight of history itself. The Howard will now come in from the right of the grandstand, executing the waggle wings maneuver. A time-honored aerial salute presented to our distinguished chief guest and a gesture of profound appreciation to the assembled audience. And there it goes, touching the sky with glory, just as it always has. To the legends of the past, to the warriors of the present, and to the dreamers of the future, this is our salute. Approaching now, straight ahead of the grandstand from the northern side, the airborne early warning and control aircraft with the MiG-29 Fulcrum fighters in a WIG formation. Leading the formation, Group Captain V. Prabhakaran and the MiG-29 spearhead, Wing Commander Bharat Kaushik with Squadron Leader R. Ganwal. আপোনাৰ সোঁফালৰ পৰা আকৌ এবাৰ ওচৰ চাপি আহিছে MiG-29 যুঁজাৰু বিমানৰ সৈতে এয়াৰবৰ্ন আৰ্লি ৱাৰ্নিং এণ্ড কণ্ট্ৰল বিমান WIG formation. Please look straight ahead. Behold the fusion of might and precision. The IL-78 tanker with the Mirage 2000 in a tow, in a breathtaking composite refueling display. Lead tanker captain, Wing Commander Umesh Kumar, and the lead pilot for Mirage 2000s is Squadron Leader Sabin N.K.
Coming straight up, once again, the Hawks return. This time, tightening their wing to mere wingspan gaps. A demonstration of discipline and daring. No asymmetry, no deviation, no hesitation. A tribute to the invisible thread of trust between each pilot. Lead pilot, squadron leader, Shankar. And now the Jaguars once more coming right in front of you. Diamonds in motion, executing a low sweeping pass over Lachit Ghat. Leading the formation today is Group Captain Sumit Kumar Dash. এতিয়া জাগুৱাৰ আৰু এবাৰ গতিশীল হীৰা লাচিত ঘাটৰ ওপৰেৰে নিম্নস্থলেৰে প্ৰদৰ্শন কৰে। Feel the tremor as the thunder passed, power blended with finesse, shadows dancing upon the Brahmaputra below. Coming straight ahead, emerging through the haze, behold the Sukhoi 30 MKI in the iconic Trishul formation. काल मैं विकराल मैं शत्रुओं को शूल हूँ, विध्वंस की हूँ गर्जना, मैं प्रलय त्रिशूल हूँ। अहोम के आराध्य उमानंद महादेव के सम्मान में आसमान में त्रिशूल को उकेरते विंग कमांडर शोभित मिश्रा, विंग कमांडर वालिया, विंग कमांडर हेमराज। Ladies and gentlemen, boys and girls, coming in right of the grandstand, India's most advanced omni-role fighter, the tip of the spear in the Indian Air Force's arsenal. Behold, the Rafale. Call sign Hathi, the majestic elephant that graces the lush greens of Assam, slicing through the sky like a bolt of silver lightning, twisting at top and diving back with the elegance of a falcon. At the controls today, Group Captain H. Vivek, representing the Falcons of the Indian Air Force. आज ये रफाल जुझारू विमान खोने चिलिका से लुई तोरे पार. Now coming in for a spiral turn, turning like a warrior, poised for counterattack, balanced, lethal, unshaken. Like a golden leaf swirling in the Brahmaputra breeze, effortless harmony between man, machine and motion. And now repositioning, the Rafale will turn at the fastest possible speed with the greatest angle in the shortest time.
Now follow its glide, slow, deliberate and effortless, dropping speeds to just 200 kilometers per hour. The power confined within poetry. The pilot engages reheat to make a figure of 8. A masterclass in control and finesse. Power, precision, perfection. The trinity of air dominance. होक्ति निखुट उत्कृष्ट टोटा ऐ तीनों मिली काटी से आकाखोर हाहाकोटा. For the next maneuver, the aircraft will cross your view before you hear it, displaying supersonic capability at low level, accelerating towards you, Rafale with a Mach run. The road trails behind, resonating across the Brahmaputra Valley. Mahabahu Brahmaputrar Uparod, ek hundar padorkhani. Now approaching from your right, demonstrating stability in an inverted flight. Rolling upside down, maintaining controlled flight along the axis, inverted against the horizon. Slicing the sky like a blade of light, a masterstroke of control. Transitioning into a half cubanate. The mighty Rafale now turning the sky into a canvas of courage and control. Lachit Ghat Jenekoi, Okhomor Gaurav or Bolidanar Suno, Rafale, Bharti Vayu Senar, Adipotya, Aru Vayu Shaktir Pratik. Now running in for the signature finale, the vertical Charlie. Aircraft is now making a high-speed run in the front and will pull up sharply into the vertical, rolling rapidly. Towards the heaven above Guwahati. From the heart of Assam to the edge of sky, from the valley of Kamakya
To the clouds above, the Rafale has once again proven that mastery of Indian aircraft knows no horizon. The roar fades, but the pride remains. Pride of a billion hearts, watching India's wings carve history into the sky. Coming in next, a sight of sheer power and pride, the Su-30 Rafale Mirage 2000 and Tejas. These very fighters that roared in Operation Sindoor now return, armed with the same might that marked their victory, the BrahMos, Scalp and Spice weapons. A visible reminder of the precision and professionalism of the Indian Air Force. Watch as they turn before you. Leading the formation today is Group Captain Saurabh Adhikari, flying the Su-30 MKI. Ladies and gentlemen, the step ladder formation. And now, keeping up with the beat and the visual treat, prepare yourself for the zipping fighter aircraft. You're about to witness a scintillating low-level aerobatic display by one of the world's most agile fighter aircraft, the Sukhoi 30 MKI. The pilot for today's display is Group Captain Ajit Pal Singh Saini, along with his co-pilot, Flight Lieutenant Nishkarsh Malviya. Apuna lokor mazor kimam zone Sukhoi. And now the pilot shall be positioning himself for an extremely complex maneuver called as loop tumble yaw. But before that, he shall make a pass above the grandstand while dispensing flares. So keep your eyes riveted. And now he's coming in for the loop tumble yaw, wherein he shall inscribe a circle in the sky. Let me see how many of you can spot him inverted, waving at you. There he pulls up, inscribing a circle. That's him inverted, and the nose comes tumbling down, and the yaw, while dispensing flares, bidding farewell to all the known laws of aerodynamics. And now from your right, he's positioning to carry out a series of rolls right in front of you. Do you want him to carry out the rolls on your command? More logot cock, ek, doi, tini. There he comes in. Cock, ek, doi, tini. What distinguishes a good fighter aircraft is not only its ability to fly supersonic, but also its capability to fly slow. And this is precisely what you're going to shortly witness. The ability to fly slow allows the aircraft to slide behind the enemy and eventually shoot him down. Now Saini is reducing his speed to mere 200 kilometers per hour. As they say, even the winds stop to stare.
And now pilot is positioning himself to display another unique ability of this aircraft, the ability to turn in a dime, as they say, minimum radius turn, speeds approximately 500 kilometers per hour. He's inscribing a circle of less than 400 meters on the ground. And now he shall be coming from 12 o'clock towards us for a maneuver called a slice. Ketiaba botahot saku solya dekhisine jodi sabu besare jururo habulikok. Aruaya sau botahot saku kholu. Ever seen a fighter in reverse gear? If not, then watch on. There he pulls up. And that's 30 tons of machinery and 2 men stationary in the sky. And there the tail comes sliding down. Down and below, flaring. And Sunny is now positioning for his final maneuver, the vertical Charlie, to offer an aerial salute to the esteemed audience on the banks of River Brahmaputra. Namaskar Guwahati from Trisonics. Upro pora sabole apnalokok bahut bhal lagise. You guys are great audience. Thank you for your support. And now take your attention towards the skies right of the grandstand. Behold a magnificent sight in our skies. Leading this awe-inspiring formation is the mighty C-17 Globemaster. And trailing it are symmetrical 9 radiant Suryakirans, the pride of India's aerobatic excellence. Together, they embody the harmony of power and precision, heavy metal might, meeting the finesse of aerial artistry. On to the horizon towards the right of the grandstand, watch the C-17 as it flies ahead, flanked by the dazzling Suryakirans, a true reflection of teamwork, discipline, and the indomitable spirit of the Indian Air Force, call sign Brahmaputra.
लहरों पर जब रण छिड़ा, गूंजा असम का नाम, तब लाचित ने दुनिया को दिया वीरता का प्रमाण। आंखों में ज्वाला और दिल में लिए मातृभूमि का मान, दुश्मन पर कर विजय, अमर हुआ उसका बलिदान। ना थमा कदम, ना झुका मस्तक, ना टूटी उसकी शान। लाचित था वो अमर योद्धा, असम का अभिमान। इन्हीं पंक्तियों की तरह आज साहस, अनुशासन और गर्व की एक झलक आपको आसमान में दिखाएंगे भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम। और आपको ये जानकर अत्यंत गर्व महसूस होगा कि ये टीम केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती 9 विमानों से गठित एरोबैटिक टीम है। Today, the Suryakiran team will paint the skies of Lachit Ghat with the colors of bravery, might, teamwork, and discipline. So please keep your gaze fixed up towards the skies. The Indian Air Force is well known for its precision, might, and discipline. And today, the Suryakiran team will demonstrate just that. So, ladies and gentlemen, please welcome with a huge round of applause the ambassadors of the Indian Air Force, the Suryakiran aerobatic team, led by Group Captain Ajay Dasrati. जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है। बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। और ये थी टीम की शानदार एंट्री एक लूप के साथ। कृपया विमानों की ओर ध्यान से देखें क्योंकि अब ये अपनी पोजीशन बदलते नजर आएंगे। लीडर के विंग से हटकर अब ये पीछे जाकर पोजीशन ले चुके हैं डेप्यूटी लीडर ग्रुप कैप्टन सिद्धेश कार्तिक के विंग्स पर, आसमान में बनाने एक अंतरिक्ष यान की आकृति जो कि समर्पित है भारत के सबसे पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान को, जिसके चुने गए एस्ट्रोनॉट्स भारतीय वायु सेना के ही पायलट्स हैं। ब्रिज के ऊपर से ये है सूर्यकिरण टीम की गगनयान फॉर्मेशन। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं, तैयार हैं। हर फॉर्मेशन में लीडर के बाईं तरफ उड़ान भरते हैं नंबर 3 स्क्वाड्रन लीडर एडवर्ड प्रिंस, नंबर 5 स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह और नंबर 9 पर है स्क्वाड्रन लीडर विष्णु। अब विमान जल्द ही आपके सामने अश्वकलांत मंदिर के ऊपर नजर आएंगे, एक और बार फॉर्मेशन में बदलाव लाते हुए। ये अगली फॉर्मेशन समर्पित है भारतीय वायु सेना के शक्तिशाली आकाश मिसाइल सिस्टम को, एक ऐसी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि पूरी तरह स्वदेशी रूप से DRDO द्वारा विकसित की गई है और जो भारत की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी के साथ एक और बार ब्रिज के ऊपर से आते हुए ये है सूर्यकिरण टीम की आकाश फॉर्मेशन। हर फॉर्मेशन में लीडर के दाहिनी तरफ उड़ान भर रहे हैं नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर दिवाकर शर्मा, नंबर 6 स्क्वाड्रन लीडर राहुल सिंह और नंबर 8 स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ। दर्शकों, अब तक आपने देखा इन विमानों को सीधी उड़ान भरते हुए,
लेकिन क्या आप इस विमान को उल्टी उड़ान भरते देखना चाहेंगे? तो कृपया अपनी दाहिनी ओर देखिए, उमानंदा टेम्पल के ऊपर से आते हुए है स्क्वाड्रन लीडर जसदीप सिंह। He will be flying the aircraft upside down. और अब कृपया एक और बार दाहिनी तरफ उमानंद मंदिर की दिशा में देखें। आपको विमान एक साथ आसमान की ओर बढ़ते नजर आएंगे। Coming in from your right, the aircraft will now draw the shape of the clover leaf, a symbol of hope, faith, and good luck. Sending you best wishes from the sky. Here they are coming in from your right. And now, please shift your gaze right above the bridge on your left for a 360-degree view of the Hawk Mark 132. और अब टीम के विमान आपकी बाईं ओर कुमार भास्कर वर्मा ब्रिज के ठीक ऊपर से पोजीशन लेते नजर आ रहे हैं और ये जल्द ही एक साथ आसमान में रोल करेंगे। प्लीज लुक राइट अबव द ब्रिज ऑन योर लेफ्ट एज दे विल बी पुलिंग अप टू प्रेजेंट द बैरल रोल। और अब दिल थाम के बैठें क्योंकि आपकी दाहिनी ओर यानी उमानंद मंदिर की दिशा से आप देखेंगे विमान को बिजली की रफ्तार और तूफान सी गड़गड़ाहट के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए। Displaying lightning fast reflexes, the aircraft will then push up towards the sky to showcase the vertical Charlie, very soon coming in from your right. और अब आपके ठीक सामने यानी अश्वकलांत मंदिर के ऊपर से विमान आपकी ओर बढ़ते नजर आएंगे और आसमान की ओर बढ़ते हुए दर्शाएंगे भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य को, जो है नभः स्पृशम दीप्तम। फिर लीडर के आदेश पर ये अलग अलग दिशाओं में फैल जाएंगे मानो सूर्य की किरणों की तरह। Presenting the team's signature maneuver right above the Lachit Ghat, the Vixen Break.
Well, don't go anywhere just yet because we are just getting started. The team will now present before you their synchro maneuvers in which we will take up the thrill by few notches. टीम का पहला सिंक्रो मैनूवर आरंभ हो चुका है ब्रिज के ठीक ऊपर से। आप देख सकते हैं 3 विमान आसमान में कुछ इस प्रकार रोल कर रहे हैं मानो ब्रह्मपुत्र नदी के अद्भुत बहाव को दर्शा रहे हो। ये विमान ठीक एक दूसरे के पीछे स्थित उड़ान भर रहे हैं, उसी प्रकार जैसे हमारे वायु योद्धा हमेशा एक दूसरे के साथ डट कर खड़े रहते हैं, हर परिस्थिति में एवं हर दिशा में। और अब ये तीनों विमान कुछ ही क्षणों में आपके ठीक सामने से गुजरेंगे और दर्शाएंगे कि किस प्रकार हमारी भारतीय वायु सेना है हमेशा अचूक, अभेद्य और सटीक। और इसी के साथ ये 3 विमान आपकी बाईं ओर ब्रिज के ऊपर से पोजीशन ले रहे हैं। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। And now coming in from your right, you will see the team leader with his wingmen forming the shape of the English letter A, which represents the mighty aerospace power that the Indian Air Force is today. But who's that coming in from your left? Well, that was number 5 who just went crossing the formation. Well, once again, please look towards your right. Coming in from above the Umananda temple, you will see 3 aircraft approaching you together. But look closely because as they get closer, the aircraft flying in the center will be seen flying upside down. But don't worry, he has complete faith in his wingmen to guide him in the sky, even when flying inverted. Here they are from your right. और अब कृपया अपनी नजरें ले जाएं बाईं तरफ ब्रिज के ठीक ऊपर। वहां से आते नजर आएंगे आपको नंबर 1, 2 और 3 जो सीधी उड़ान भरेंगे और नंबर 4 और 7 उनके इर्द गिर्द उड़ान भरते हुए बनाएंगे आसमान में एक डीएनए की आकृति। And in our DNA, we store the core values of the Indian Air Force: mission, integrity, excellence. Coming in from above the bridge is presenting the DNA maneuver. Coming up next from above the Ashwaklant temple in front, you will see 3 aircraft flying in towards you in perfect alignment.
one behind the other in a display of precision, discipline, and unwavering determination. Do look closely because they will soon disperse in the sky, showcasing the three mighty arms of the Indian Armed Forces, which are the Army, the Navy, and the Air Force, which operate in different domains but are united in their mission of defending our great nation. Coming up from straight in front of you is the Trishul maneuver. और अब कृपया अपनी दाहिनी ओर देखें। उमानंद मंदिर की दिशा से आते आप देखेंगे 5 विमान, मगर इन्हें ध्यान से देखते रहें क्योंकि जैसे ही मैं 3, 2, 1 की गिनती करूंगी, ये पांचों विमान एक साथ आसमान में रोल करेंगे। So let's look towards our right. Are you ready? In 3, 2, 1, here we roll! और रोल के तुरंत बाद ये आसमान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और जैसे ही ये नीचे आएंगे, ये अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ के विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे। आपको अनुशासन और सटीकता की एक मिसाल देते हुए ये अगला प्रदर्शन है सूर्य किरण बर्स्ट। Keeping these aircraft always shining bright and ready to rock and roll is our maintenance team, led by Wing Commander Abhimanyu Tyagi, Wing Commander Sandeep Dhayal and Flight Lieutenant Manil Sharma. और अब कृपया अपनी नजरें ऊपर आसमान में ले जाएं, क्योंकि अब हमारे पायलट्स बन जाएंगे आर्टिस्ट्स और आसमान में बनाएंगे एक बेहद खूबसूरत चित्र। लाचित की भव्य प्रतिमा के ठीक ऊपर देखें, आसमान में बन रहा ये दिल समर्पित है गुवाहाटी के लोगों को। आप सभी को 93वें भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए। एंड हियर कम्स आवर क्यूपिड स्क्वाड्रन लीडर राहुल सिंह, ड्रॉइंग एन एरो थ्रू द हार्ट एंड स्प्रेडिंग द लव। और अब कृपया अपनी नजरें ठीक अपने सामने ले जाएं। उत्तर गुवाहाटी की दिशा से आते हुए टीम के विमान एक साथ आपकी ओर बढ़ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में लीडर के आदेश पर अलग अलग दिशाओं में फैल जाएंगे। और उससे पहले चलिए सुनते हैं लीडर का संदेश आप सबके लिए। Everybody, blue skies and happy landing. Kiran Jai Hind. और ये था सूर्य किरण टीम का एरियल सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि और हमारी ऑडियंस के लिए। आशा है कि ये शो देखकर आपको भी उतना ही आनंद आया होगा जितना हमें इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करके आया है। ऑन बिहाफ ऑफ द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, दिस इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू विशिंग यू ब्लू स्काईज एंड हैप्पी लैंडिंग्स।
After this extraordinary fly past of our air power, be ready to witness our air warrior drill team named Arjun, a spectacle of rhythm, precision, and pride, the first of its kind in India. Comprising 28 young and vibrant air warriors, each one of them has been carefully chosen to represent the very essence of Air Force discipline. Formed in 2016, this team has carried the glory of the Indian Air Force beyond borders, performing in Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and Mauritius, and winning the admiration wherever they have marched. Their weapon, 5.5 kg .303 rifle with bare bayonet, demanding not just strength, but an unbreakable harmony between mind, body, and spirit. Every synchronized spin, every precise movement is a result of tireless practice and absolute dedication. Today, the Team Arjun stands tall as a living embodiment of courage, commitment, and coordination. Their motto is not just a phrase, but the heartbeat of every air warrior in the team. Drill to thrill.
हर कदम में अनुशासन, हर हरकत में सटीकता और हर दृष्टि में प्रेरणा, यही है भारतीय वायु सेना की पहचान. Ladies and gentlemen, please put your hands together once again for the breathtaking performance of Air Warrior Drill Team Arjun of the Indian Air Force. The audience is requested to rise for the national anthem. দৰ্শকক ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ বাবে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল. दर्शकों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान हेतु खड़े हो जाएं. नमस्कार जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Ladies and gentlemen, you're kindly requested to remain seated till the time our honorable guests are departing. আমাৰ সন্মানীয় অতিথিসকলক প্ৰস্থানৰ সময়লৈকে বহি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল. Ladies